Good morning, team. There are many stocks which are showing a lot of strength. Sonacom after the block deal came back strongly and it has gone to a stronger hand. So I think Sona BLW is likely to outperform. Bharati Airtel yesterday made an all-time high of 888, but it will settle lower at 849. The stock looks very good for 1050 as a target. We like other stock like Coforge, SBI Life, NCC, PNC Infra, Aluwalia Contract, Kote Patel after result has started to outperform. BS Soft, BDL, Ami Organic, Mahindra Holiday, and even Narayana Hirdalaya. Hospital stock Narayana Hirdalaya is doing very good. VRL Logistic. So these are few stocks which we like, and I think as the result season has come to an end, from now on, very good results or stocks which are very good will start to outperform. Even in banking, IDFC, First Bank, Bank of Baroda, and few other smaller banks will start to outperform. In NBFC, we like Shriram Finance, M&M Finance, and L&T Finance, which can start to do well. In stock-specific news, Coal India will come with the OFS, which will have some drag on the market. Yesterday, there was a report that Mumbai has revenue for property registration was 811 crores in May 2023. Amount-wise, it is higher by 12%, but they have sold only 9,542 units. Unit-wise, it is down 3%. So, real estate stock will continue the performance. We like DLF, and something connected with Mumbai, we like Oberoi Real Estate and even Godrej Properties. Today morning, there was a news that US House passes debt ceiling bill. It has passed in the lower house. It has to pass the Senate, and after which even the president has to sign. And the deadline is Monday. But I have seen before, government defaulting on payments, a few occasions before. So I don't think this is a very tight timeline. It can be moderated. So at least the lower house has passed. So Senate has to pass and then president has to sign. So at least one level is passed there. Now there are rumors that GST collection will be at all-time high for May 2023. The amount which the social media is speculating is 1.9 lakh crore. GDP numbers came. GDP for Q4 FY23 was at 6.1. It was higher than market expectation, and the full year GDP was at 7.2. So this is very positive. India Pesticide has reported results. Their full year revenue was at 898 crores, higher by 23.2%. EBITDA margin was 23.4%, but profit after tax declined by 8.9% at 143 crores. And Mahindra CIE has reported to the exchange that they have approved a name change. So Mahindra has sold the stake. Now it has become CIE Automation, which is a Sweden company. The promoter is from Sweden, so they will have the majority stake. We are very positive on the stock for a long-term perspective. In Adani Port, Deloitte flags a related party transaction. So they have raised the concerns for 3 transactions. In one unique transaction, it is a port in Burma or Myanmar, where they say initially they wanted to sell at 2,045 crores, but the actual transaction happened at a very low 200 odd crores. But Adani is refuting the allegation. But Deloitte, flagging of concerns of related party transaction is bit negative for the group, and these are allegations which even the Hindenburg report has said
But anyway, any company which is politically related, we don't track, so we don't have a comment on this. Fiscal deficit narrows to 6.4% of GDP in FY23. This meets government target. 17.3 lakh crore is the total fiscal deficit, which is very positive for India. India is one country where all analysts are very gung-ho about. I'm talking about international analysts. So this will make India market rally. So be with quality stocks. Now, be with stocks which have growth. I think market will do wonders in the months and years to come. Patanjali Food promoters to dilute 6% stake to meet minimum public shareholding norms of 25%. HOEC to drill 18 wells in Arunachal Pradesh to increase production to by 4-folds. The company has been surprising on many fronts. So if this 18 wells also comes on stream, I think that will be very positive for this company. Hindustan Oil Exploration, HOEC is called. So they are doing very good, but we don't track the company. But this company, if somebody is interested, you can start tracking it. With that, over to you, team. गुड मॉर्निंग। अभी हम ये कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं सोनाकॉम के साथ। सोनाकॉम में जो ब्लॉक डील देखने को मिले और सोनाकॉम के जो काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स के बाद जो जिस हिसाब से इसमें जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के जो इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं, तो हमें लगता है कि सोनाकॉम में काफी स्ट्रॉन्ग अपसाइड बायस देखने को मिल सकता है। ये ऑलरेडी हमारे रिकमेंडेशंस में है ये स्टॉक, तो हम इससे पोजिशंस फ्रेश एडिशंस के राय देते हैं। इसके आगे हमने देखा कि कल भारती ने एक ऑल टाइम हाई बनाया, 888 का लेवल्स देखा है और क्लोजिंग में थोड़ा सा नीचे आया था, बट देन हमें लगता है कि भारती जो एक ऑल टाइम हाई की तरफ अप्रोच कर रहा है। नियर टर्म में 1050 का टारगेट बन के हमें लगता है कि इस लेवल को और छू सकता है। तो बेसिकली भारती में हमारा पॉजिटिव रहेगा। काफी सारे क्वालिटी कॉल्स, क्वालिटी स्टॉक्स जिसके नंबर्स वगैरह रिजल्ट्स वगैरह अच्छे आए थे, उसमें हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें लगता है कि ये जून मंथ जो है एक पॉजिटिव मंथ रहने की उम्मीद है, तो अपसाइड बायस रहेगा। स्टॉक्स जैसे कि कोफोज है, SBI लाइफ है, PNC इंफ्रा है, आलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट है, कोल्टे पाटिल है, BDL है, एमी ऑर्गेनिक्स है, महिंद्रा हॉलीडेज है, नारायण क्रूड ऑयल है और VRL लॉजिस्टिक्स, ऐसे कुछ चीनिंदिया स्टॉक्स है जिसमें हमें लगता है कि पॉजिटिव बायस रहेगा और किसी को पोजिशनल या शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी ट्रेड बनाना है तो वो बना सकते हैं। IDFC अगर बैंकिंग में बात करें तो IDFC फर्स्ट बैंक जो, उस पर भी हमें टेक्निकली प्लस फंडामेंटली दोनों ही हमें पॉजिटिव व्यू है, तो उसमें भी हम पॉजिटिव व्यू लेके चलेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा है और जो स्मॉलर बैंक है जिसमें मोमेंटम आप देख सकते हो, फेडरल बैंक है, यूनियन बैंक है, तो ये हमें लगता है कि अभी ये बैंकिंग में भी ये रैली कंटिन्यू रहेगी, तो पॉजिटिव बायस रहेगा। NBFC में अगर बात करें तो M&M फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस और L&T फाइनेंस पे भी हमें लगता है कि पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा, तो हम इसमें इन सब स्टॉक्स में पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। तो कोल इंडिया के ऑफिसेस के चलते हुए थोड़े से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आने की उम्मीद है, बट देन डिक्लाइंस पे, पावर स्टॉक्स पे ओवरऑल हमें लगता है कि थोड़ा उछाल देखने को मिल रहा है, तो शायद डिक्लाइंस पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है कोल इंडिया में। मुंबई में प्रॉपर्टी रियल्टी के नंबर्स आए थे जो मई में वो 811 करोड़ के करीब आए थे, जो कि 12% राइज है। यूनिट्स में थोड़े से डिक्लाइन, यूनिट्स के जो सेल ऑफ है उसमें थोड़े डिक्लाइन देखने को मिले, बट हमें लगता है कि मुंबई के जो प्रॉपर्टी रेट्स काफी वापस उसमें तेजी देखने को मिल रही है, तो हमें ये जो स्टॉक्स है, DLF उसमें नहीं आता है, बट देन DLF है, ओबेरॉय रियल्टी है, गोदरेज प्रॉपर्टीज है, ये स्टॉक्स में वापस आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यूएस के जो डेप्थ सेलिंग की जो बिल उसमें वो पास हो चुका है। अभी लोअर हाउस में वो पास होना, लोअर हाउस में पास हो चुका है। सेनेट और प्रेसिडेंट के इसमें अप्रूवल्स बाकी है, जो मंडे तक का डेडलाइन है, तो लगता है कि ये हो जाएगा। GST के कलेक्शन ऑल टाइम हाई पे है। मई के जो नंबर्स आए 1.9 लाख करोड़ के करीब आया है। GDP की जो ग्रोथ है FY24 का 6.1% है, हायर देन मार्केट एक्सपेक्टेशन थे, 7.2 के लेवल्स पे आए हैं।
तो ये जो गवर्नमेंट के डेटा है उसमें भी काफी पॉजिटिव है। महिंद्रा सीआई के नंबर, महिंद्रा सीआई में नेम चेंज का ये नोटिफिकेशन है, जिसपे वो अभी सीआई ऑटोमेशन होगा, जो एक स्वीडन की कंपनी होगी, जो स्टेक स्वीडन के पास ज्यादा होगा। बट ओवरऑल ये स्टॉक पे हमारा काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव व्यू है, तो हमें पॉजिटिव व्यू लेके ही चलेंगे। अगला अपडेट अडानी पोर्ट पे है। एक डेलोइट ने एक कंसर्न रेज किया है वहाँ पे कुछ 3 ट्रांजेक्शंस के ऊपर, जहाँ पे पोर्ट है बर्मा और म्यांमार में, वहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शंस कुछ सेल आउट होने थे 2045 करोड़ के करीब। बट देखने में आया कि वो ट्रांजेक्शन काफी लो लो वैल्यू पे ट्रेड हुए हैं, तो शायद ये एक कंसर्न है। तो न्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्निकल ये एक नेगेटिव सेटअप है। बट अडानी पे ये फिलहाल हम वैसे कुछ कमेंट नहीं करेंगे, बट ये ऐसे इंफॉर्मेशन हम ये बता रहे हैं। उसके बाद पतंजलि के प्रोमोटर्स ने थोड़े से पोजीशंस डाइल्यूट किए नॉर्म्स मीट करने के लिए। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। और एक अपडेट है फिजिकल डेफिसिट के ऊपर, जो कि नैरो होता हुआ दिखाई दे रहा है गवर्नमेंट के, जो 70.3 लाख करोड़ के करीब है। जो ये बेसिकली जो ओवरऑल इंटरनेशनल एनालिस्ट वगैरह जो जज कर रहे थे कि जो इंडिया के जो फिजिकल डेफिसिट के ऊपर जो जिस हिसाब से नैरो होते हुए दिखाई दे रहा है, ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। हमें लगता है बहुत ही स्ट्रांग और पॉजिटिव है। कोल इंडिया के ऊपर अपडेट है। कोल इंडिया में गवर्नमेंट बेचेगी 18.4 प्लस, जो कि 3% के स्टेक के करीब होता है। ओ एफ एस इसके थ्रू है, तो जून 1 और 2 तारीख को होगा। इसकी जो फ्लोर प्राइस जो उन्होंने सेट किया वो 225 रुपीज पर शेयर के पास है। एच एफ सी एल के ऊपर एक अपडेट है। कंपनी बता रही है कि वो 470 करोड़ स्पेंड करेगी, जो कि करंट ऑप्टिकल फाइबर की जो कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, जो कि 33.9 मिलियन फाइबर किलोमीटर के रेंज है फ्रॉम 10 मिलियन मिलियन फाइबर किलोमीटर के रेंज से, जो कि इनके जो मैन्युफैक्चरिंग फैकल्टी है वो तेलंगाना में है। ये बेसिकली ये एक पॉजिटिव न्यूज रहेगा एच एफ सी एल के लिए। आरबीआई के सेक्टोरियल क्रेडिट ग्रोथ के नंबर्स आए थे, जो ओवरऑल पॉजिटिव है। और नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, जो कि 16.1% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला है। और बाकी के जो सेगमेंट्स है, जैसे एग्री है, इंडस्ट्री है, वहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिला है। सिर्फ एक रिटेल सेगमेंट क्रेडिट ग्रोथ है, वहाँ पे थोड़ा सा मॉडरेट रहा है, जहाँ पे नंबर्स पिछले मार्च के मुकाबले थोड़े से कम आए, जो जबकि पिछले मार्च में 20.6% था और अब की बार 19.4% है। तो ये रिटेल सेगमेंट में थोड़ा सा डी ग्रोथ देखने को मिला है। डिपॉजिट ग्रोथ में अपटिक था, 21 बेसिस पॉइंट्स था फोर्टनाइटली बेसिस पे, जो कि 10.4% होता है। अ, आगे चलते हमें लगता है कि ये क्रेडिट ग्रोथ जो है वो 12 to 14% के रेंज में रहेगा। और रिटेल लोन के सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स देखने को मिल सकते हैं। जो हमारे जो बैंकिंग में जो पिक्स है, उसमें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एंड फेडरल बैंक ये हमारे फंडामेंटल पिक में है ये। अगला एक हमने एनालिस्ट मीट किया आलू वाले कॉन्ट्रैक्ट इनके एनालिस्ट मीट में एक अटेंड किया था। उसमें एक अपडेट है कि कंपनी का जो मेन फोकस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स पे ही रहेगा, और कोई वो डाइवर्सिफाई वगैरह नहीं करने वाले हैं। जो उनके जो कैपेक्स के जो साइकिल की ग्रोथ है, वो हमें लगता है कि ये इलेक्शन जब तक 24 का इलेक्शंस आएगा तब तक ये मेंटेन रहेगा। उनकी जो ऑर्डर बुक है उसमें 20% इंक्रीज देखने को मिल सकता है। रेवेन्यू में 20% इंक्रीज देखने को मिल सकते हैं। और एबिटा मार्जिन में 30 to 40 बेसिस पॉइंट्स में मीन्स एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हमारा इसमें बाय रेटिंग है 697 का टारगेट प्राइस है, जो कि लगभग 20% के करीब हो सकता है करंट प्राइस से। Technical and derivatives outlook. If you see in yesterday's trading session, after two consecutive days of consolidation, Nifty yesterday went to fill the gap which had it created on Monday's trading session, and we are seeing that the Nifty is able to hold the 18 crucial 500 level. So as far as Nifty is holding 18,480 odd levels yesterday's low, so index is in the uptrend, and this could be a minor blip or small consolidation zone.
On the flip side, if you see if the index breaches below yesterday's low and if we move towards 18,200, should be an ideal support for the index going forward here. And on the higher side, if you see if index moves over 18,700 levels, so then there could be a more short covering towards 18,900 levels. So on the sectoral front, if you see yesterday, banking, cement and finance and media and textile sectors were on the winning side, while the chemicals and metal sectors were on the losing side. Now, any dip towards if you see today's expiry range, also if you see that there is heavy writing at the 18,600 odd levels, and we have seen yesterday unwinding on this. If any breach above 18,600 level could lead to a short covering in the index going forward. So coming to the Bank Nifty also yesterday witnessed an intraday dip of 516 odd points, and yesterday it managed to close above 44,000. That's a good thing because in the last hour you could see Kotak Bank helping out the Bank Nifty index to gain a bit losses. Now coming to a stock specific front, then IDFC Bank, PNB and Bandhan Bank and Kotak Bank were the stocks which were on the gaining side, while AU Bank corrected more than 2% in the index. Now similarly for the Bank Nifty also 43,500 would be a crucial level for the index going forward ahead, and on the higher side as soon as 44,500 is taken out, we can see call writing on the, we can see a straddle over there is both heavy call writing, put writing. So as soon as 44,500 is taken out, we could see a short covering index in the index going forward ahead. So now coming to the derivatives data, we have witnessed yesterday long unwinding in the Nifty futures to order 5.2%, or PCR is also below 1. It's 0.99 from 1.32. And coming to the Bank Nifty PCR is at 0.82 from 1.22, and there was short built up in the index. It was a very minor short built up in the index. And coming to the options data for the Nifty for today's straddle is at 18,600, 18,700. And for the put side, if you see 18,500, 18,350 are the strikes where we are seeing writing on the put side. So coming to the Bank Nifty, 43,900, 44,500 are the additions on the put side. And on the call side, if you see 44,200, 44,300 with the strikes where hurdles are placed. So yeah, coming to the FI data, yesterday FI had massively reduced their longs position to the tune of 18,000 odd contracts. So now they are net long by only 10,000 contracts, and net long by 10,000. So now the long short ratio is standing at 53 odd percent. So net long by 10,641. On the cash market, if you see, they had bought at 3,400 crores, but DIS has sold at 2,500 crores. Long build-ups are witnessed in Indus Tower, Torrent Pharma, and Bharti Airtel, while the short build-ups are witnessed in HAL, Kotak, and Polycab. Stocks that should be kept on radar are CDSL, Sun Pharma, Escorts, and VS. These stocks are looking for a short-term move that should be kept on radar. Coming to the SGX is showing a minor dip of 31 odd points. So it's a flattish opening for the index for the today. That's it from mine. I'll hand over to Archana ma'am for more updates. Thank you, Hitendra. Good morning, team. So few updates from my side, starting with Coal India. The government will sell up to 18.4 crore shares of the company, representing 3% stake via an open offer sale on June 1st and 2nd. The floor price of the offer has been pegged at rupees 225 per share. On MOIL, the company has increased prices of manganese ore grades by almost 10% effective from June 1st. So that bodes well for earnings growth of the company, and that is a positive news on the company's front. On HFCL, the company will spend close to 470 crores to expand current optical fiber capacity to 33.9 million fiber kilometers per annum from 10 million fiber kilometer per annum at its manufacturing facility in Telangana. So again, a very positive news on HFCL front. On Laurus Lab, the company will acquire additional 7.2% stake in immunoadaptive cell therapy for 80 crores. Some promoters and senior management of the company will also acquire 0.5% stake in the company for 4 crores through the secondary purchase. The company already holds 26.6% stake in the this Immuno Act. Yesterday, this RBI sectoral credit growth data has come. So overall, the non-food credit continued its strong growth momentum for FY23 in April this year, and it stood at around 16.1% growth of on a YY basis. All the major segments such as agri, industry, as well as services continued to witness strong positive growth momentum in April 2023. However, the retail segment credit growth moderated during the month and stood at 19.4% as compared to 20.6% in March 2023.
Deposit growth saw the uptick of 27 bips on fortnight basis and stood at 10.4%. Going forward, we expect credit growth to remain in the range of 12 to 14% on the higher base impact and would be led by the strong growth in the retail loan. Among our banking coverage universe, our top picks are HDFC Bank, ICICI Bank, and Federal Bank. And lastly, on Ahluwalia contracts, so yesterday we attended the analyst meet. The company's main focus will be on funding construction sector. Will be on the building construction sector and will remain in the same sector, and no plans to diversify. Management expects capex cycle to grow at least till election and no slow moving projects in order book. Company expects 20% increase in the revenue and EBITDA margin increase of 30 to 40 bips in near term. We have buy rating on the stock with a target price of 697, which is roughly 20% upside from current level. So that's it from my side. Now I hand it over to Shantanu for further research updates. Thank you, and over to you, Shantanu. Yeah, thank you, Archana ma'am. So starting with some news related to the economy. The Ministry of Statistics and Program Implementation on 31st May said that India's GDP growth rate rose for the first time in the 3 quarters to 6.1% in Jan to March period. For year 2022-23 as a whole, the Statistics Ministry first provisional estimate has pegged the GDP growth at 7.2%, with 20 basis points higher than the second advance estimate of 7%. The next news is about South Indian Bank, where the bank said that its board of directors approved the panel of candidates for the position of managing director and chief executive officer of the bank. The bank will be submitting its application to RBI with the names of the candidates seeking approval for the appointment of the new MD and CEO. The following news is related to Welspun Corp Limited, where the company posted an 8.90% decline in its consolidated net profit to rupees 240.08 crores for the Jan to March quarter, which was hit by a higher expense. It had clocked a net profit of rupees 263.56 crores during the same quarter of the preceding financial year. The company's total income rose to rupees 4,132.38 crores from rupees 2,413.48 crores in the year ago quarter. Its expenses rose to rupees 3,835.55 crores from rupees 2,033.16 crores in the Jan to March period of financial year 2022. The next news is about Gati Limited, where Piroj Shah Aspi Sarkari has resigned as the Chief Executive Officer of the logistics company with effect from 31st May. The company has appointed Piroj Shah Aspi Sarkari as MD and CEO of its subsidiary Gati Kintestu Express with immediate effect in the place of Mr. Adarsh Sudhakar Hegde, who stepped down from the said position of Chairman and Managing Director with immediate effect. The final news is related to the Adani Group, where Gautam Adani's conglomerate is looking to raise about $3 billion through an equity share sale to institutional investors in the boldest comeback strategy after the Ports to Energy Group was hit by a damning report of the US short seller. While boards of Adani Enterprises Limited, the group's flagship firm and electricity transmission company, Adani Transmission Limited, has already approved raising up to rupees 21,000 crore through share sales to qualified institutional investors. The board of Adani Green Energy Limited is likely to do so for raising up to $1 billion in the next couple of weeks.